Okay, so hello everyone. My name is Kunal and I'm your mathematics tutor. And we are actually doing probability. And today is our third lecture in chapter probability. So let me tell you something कि हमने कल की क्लास में क्या क्या कवर करी थी. So in yesterday lecture we actually cover about the things like playing cards. जिसमें हमने देखा था कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिनमें 26 were red cards and the other 26 were the black cards. And out of black cards, they were it's subdivided into two types, which is like one was spade, another one is club, and each one has 13 card. And the next, the red card is also subdivided into two part. The one is diamond, and other one is heart, and each one has 13 card as well. And we all familiar with these 13 cards, which is actually named as like king, queen, jack, ace, and there will be 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. These are the fair cards in a deck of right? So हमने कल इस पर डिस्कस करी थी. So let's try to deal with some problem based on dice, and then we look into some problem of playing cards. Okay, so let's start it. So क्योंकि हमने देखो क्वाइन करा था फ्लिपिंग कॉइन पे, तो हमने 3 कॉइन फ्लिप तक की केस देख ली थी जिसमें चीजें क्लियर हो गई थी. नाउ इट्स टाइम टू डील विद द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाई. सो लेट मी टेक इट हियर. Okay, so let me take one problem. Actually today is mostly based on problem type, so let me take it as problem lecture. Okay, so the first problem is based on coin, based on flipped coin. So the first question is 50 coin are tossed. 50 coin are tossed. Then find the probability of getting odd number of it. Then find the probability of getting odd number of it. Getting odd number of it. Okay, so this is the actually question that we have to find. कि मैंने 50 कॉइन को टॉस करी है एंड वी हैव टू फाइंड कि odd number of head आनी चाहिए. That means let us suppose कि मैं अगर सैंपल स्पेस की बात करता हूँ, सैंपल स्पेस, तो इट विल बी समथिंग लुक लाइक, लुक एट हियर. मेरे पास एक हेड होनी चाहिए, बाकी सारी टेल होनी चाहिए. बेसिकली यहाँ पे क्या है, वन हेड एंड रेस्ट 49 वर टेल. क्योंकि मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास ऑड नंबर ऑफ हेड होनी चाहिए, है ना. तो एक हेड, वन हेड इज ऑब्वियसली ऑड नंबर एंड 49 वर टेल होनी चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज दो हेड नहीं हो सकते हैं. दो हेड नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि बेसिकली दो हेड इवन हो जाएगा, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इवन, मतलब ऑड नंबर ऑफ हेड. तो क्या होगा, एक हेड चाहिए, उसी तरीके से तीन हेड चाहिए, बाकी सारे टेल होने चाहिए, है ना. तो यहाँ पे जो अपना सैंपल स्पेस बना है, अगर इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा बनेगा, एक हेड 49 टेल, तीन हेड 47 टेल, पांच हेड 45 टेल, है ना. ऐसा सा चलते जाएगा कहाँ तक, 49 हेड एंड वन टेल तक, है ना. सो दीज आर माई सैंपल स्पेस, फेवरेबल सैंपल स्पेस, है नहीं है. ठीक है, तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी आएगा, अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट विल बी लाइक NE बाई NS, है ना. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सैंपल विल बी, टोटल सैंपल कितना होगा, फेस इज बेस एंड नंबर ऑफ टाइम्स इज पावर. सो दो फेस है एंड 50 कॉइन्स है बेसिकली, तो 2 to the power 50 इज आवर नंबर ऑफ सैंपल. इसकी ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास और उसके प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. सो इट विल बी लाइक फाइन. So there is our number of sample will be like 2 to the power 50. Now our event क्या होनी चाहिए, एक हेड हो प्लस तीन हेड हो
प्लस 5 हेड हो, ऑड नंबर ऑफ हेड चाहिए, राइट? ऐसा कहां तक जाएगा? 49 हेड तक। नाउ एक हेड है, तो अब जो एक हेड है ना, वो 50 कॉइन में से कोई एक कॉइन पे भी तो आ सकता है ना। लाइक अगर मैंने टॉस करी, तो जरूरी थोड़ी है कि पहले ही कॉइन पे हेड आए। दूसरे जैसे ऐसा मैं कह रहा हूँ कि मैंने 50 कॉइन को टॉस करा, ठीक है, मैंने 50 कॉइन को टॉस करा, तो माई थिंग्स इज की बस मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट सैंपल स्पेस की बात कर रहा, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक हेड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब कॉइन को टॉस करा, तो उसमें उन 50 कॉइन्स में से किसी भी एक कॉइन पे मेरे को हेड चाहिए, बस एक हेड चाहिए। बाकी सारे 49 कॉइन्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? टेल्स होने चाहिए। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि बस एक हेड होनी चाहिए, और वो 50 कॉइन्स में से किसी भी एक कॉइन पे हो सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हियर इट इज 50C1, कोई भी 50 कॉइन्स में से एक कॉइन पे मेरा हेड होना चाहिए। मतलब कि मैंने यहाँ पे आपने 11th में एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ा होगा, तो उसकी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 50 में से कोई भी एक कॉइन जो होनी चाहिए मेरी, क्या होनी चाहिए? हेड होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा कि 50 में से एक कॉइन को सेलेक्ट कर लिया, विच इज हेड। दूसरा क्या होगा? 50C3, तीन हेड होने चाहिए। अब तीन हेड उन 50 कॉइन में से कैसे भी आ सकता है, तो मैंने क्या करा? सेलेक्ट, बेसिकली आई डू हियर सिलेक्शन, सिलेक्शन यूजिंग कॉम्बिनेशंस। आपने ये सारी चीजें पीएनसी चैप्टर में पढ़ रखा होगा। सो आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनसी हियर। प्लस 50C5, ऐसा था कहां तक जाएगा? 50C49 एंड डिवाइडेड बाई 2 to the power 50। सो हियर भी देखो, अब इसकी सम हमें पता है कि क्या होती है एक्चुअली में। यहाँ देखो, वी ऑल नो दैट कि सम इन बाइनोमियल, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो रहा है बाइनोमियल वगैरह का, सो ट्राई टू फिगर इट आउट। इन बाइनोमियल वी ऑल नो दैट the sum of coefficient of odd terms is equal to sum of coefficient of even term, sum of coefficient of even term is equal to 2 to the power n minus 1, है ना? In binomial, the sum of coefficient of odd term is equal to sum of coefficient of even term is equal to 2 to the power क्या होती है? n minus 1. So here the n value is nothing but 50, because we are comparing from NCR now, so n value is equal to 50 here. So what I'm gonna write here is 2 to the power 49 by 2 to the power 50. So our probability will be 1 by 2. I hope this thing will be clear to all of you कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। प्रॉब्लम बस आपको यूज, मैंने देखो ये है कि मैंने बस दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशंस में क्वेश्चन को मैं कैसे टफ बनाऊं, द थिंग्स इज यही है ना। तो मैंने बस करे कुछ नहीं, दो चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करा है मैंने। तो मैंने क्या करा कि देखो, अब पहले फर्स्ट सैंपल को देखते हैं, तो एक हेड होनी चाहिए, वो किसी भी कॉइन पे आ सकती है। तो मैंने क्या करा कि कॉम्बिनेशंस के यूज करके एक को सेलेक्ट कर लिया जिस पे आया होगा। वैसा अगर अब यहाँ पे एक ये बाइनोमियल सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल बन चुके हैं। सो इट सम विल बी लाइक 2 to the power n minus 1, जो हमने बाइनोमियल में आपने पढ़ रखी होगी, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम करा होगा। सो इट विल बी इक्वल टू 2 to the power n minus 1, so it will be 1/2, है ना? So I think it will be clear to all of you. Now let's move on to the dice problem. So look at here. So let me write it here. And what I'm trying to say here is, okay. The question is, two dice are thrown, then find the probability of getting sum of digit is 9 and sum of digit is prime number. There were two problem actually. Let me write it here. Question है, two dice, two dice are thrown, two dice are thrown, then find the two dice are thrown, then find the probability
then find the probability of getting, the first thing is sum of digit is 9. Sum of digit is 9. And the second thing is sum of digit is prime number. Sum of digit is prime. देखो ये इक्वेशन की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है. सो वी विल डिस्कस दिस शॉर्ट ट्रिक एज वेल, क्योंकि देखो ये प्रोबेबिलिटी इक्वेशन जो है ना, अगर बहुत टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है, तब भी वो 4 से 5 मिनट में बन जाएगा. बहुत ज्यादा टफ की मैं बात कर रहा हूँ. अदरवाइज विद इन 30 सेकेंड इसकी प्रॉब्लम बनती है. ठीक है. बस एक बारी चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ कि कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, बस यही आपने सोचनी है. ठीक है. उसके बाद इसकी प्रॉब्लम विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा. अगर बहुत ज्यादा टफ हुआ, बहुत ही ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस यूज हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व हो रही है ना, तब जाके वो 3 से 4 ही मिनट या उससे भी 4 से 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट. वो भी बहुत रेयर प्रॉब्लम्स होती हैं वो, जब उसमें बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व होने लगती हैं, क्योंकि सारे केसेस हमें लिखनी होती हैं. सो इट्स लाइक वो तब तब जाके वो 4 से 5 मिनट लगेगा. अदरवाइज इट विल बी इजिली सॉल्वेबल इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट. So you are in right now in initial stage, so try to write by sample space and all, and then we will discuss about its sort trick. So look at it. First we have to, like, two dice are thrown, so we all know that the number of sample is equal to face is base. So there was 6 face and number of times is power, so 36. Now you have to write the sample space. So our sample space कुछ ऐसा होगा, देखना. It will be like दोनों पे 1 आ जाए, है ना. पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ जाए. पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आ जाए. 1 आया 4 आ जाए. 1 आया 5 आ जाए. 1 आया 6 आ जाए. पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए. 2 2, it will be like 2 3, it will be like 2 4, 2 5, 2 6. Then will be पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए. फिर 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6. Then it will be 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 and 4 6. And then it will be like 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6. And the second and the last one is like 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. Okay, so these are the, count it, it's like 36. 1 2 3 4 5 6, 6 in a column, and there will be 6 columns, so its total number of element is 36. Okay, so now what I'm trying to say is our favorable outcome which favors the event which is sum of digit is 9 कहाँ पे है. So if you look at here, यहाँ पे एक ट्रिक है, ऐसा ट्रिक है कि देखो, if you look at here, this arrow has a sum 2. This arrow has a sum 3. Let me write it here. This arrow has a sum 3. This arrow has a sum 4. Are you getting what I'm trying to say? This arrow has sum 5. And this arrow, actually this arrow has a sum 6. Same way, this arrow has a sum 7. Similarly, this arrow has a sum 8. And this arrow has a sum 9. And this arrow has a sum 10. And this arrow has a sum 11. And this arrow has a sum 12. Let me zoom in so it will be visible to you. Okay. So if you write it in a proper square format, so it will be easily visible to you. वो लाइन स्ट्रेट आ जाएंगे ना, यहाँ पे आगे पीछे मैंने लिख रखा है, that's why it will be seem to be in difficult way. Okay, so
I can made or what? So let me, okay. So let me look at here. Is it possible to make yeah, table is there. I can make. So it will be like 36, right? Okay, I need more table here. I think it this not work. Wait, actually give me a moment so I can. So forget this table. I have to insert a new table of 6 cross 6. Wait. Okay. So I hope you will get here. 1, 2, 3, 4, 5. So okay, it's again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And they will be like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So forget all. Just focus on these table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Uh, Forget the rest of table and try to focus on here. And let me zoom in here. Okay. Okay. So let me write it here again. The things जो मैंने वहाँ पे लिखा था. It will be like 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, and 5, 5, 6. And rest will be 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6. Now look at it. Look at this diagonal. It will be like sum 1, right? Sum 2. Sum of element will be 2. Look at this diagonal. Sum will be 3. And 2 plus 1 and 1 plus 2. Sum of element will be 3. Look at this diagonal. Just trace the diagonal, right? वही वहां पे नहीं बन रही थी. That's why sum will be 4. Look at here. 3 plus 1, 4. 2 plus 2, 4. And 3 plus 1, 4. Look at this diagonal. Let me make it in a straight way. So its sum will be 5. Carry on. Look at this diagonal. If we follow this diagonal, the sum of each element will be 5 plus 1, 6, 4, 2, 6, 3, 3, 6, 4, 2, 6, 5 plus 1, 6. Now let's follow the next diagonal, which is here. The all sum will be like sum of 7. 6 plus 1, 7, 5 plus 2, 7, 3 plus 4, 7, 4 plus 3, 7, 5 plus 2, 7, and 6 plus 1, 7. Now next follow the next diagonal. So it will be something like sum of 8. And then follow the next diagonal. So it will be like sum of 9. Then follow the next diagonal will be 6 plus 4, 10, 5 plus 5, 10, and 4 plus 6, 10. So just trace the diagonal. Its sum will be 10. And then trace the next diagonal. Its sum will be 11. And then trace the next diagonal. Its sum will be 12. So आपको क्या यहाँ पे समझ में आया कि इस टेबल से क्या चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर दो डाइस को थ्रो करते हैं ना तो मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 2. क्योंकि अगर एक डाइस की मिनिमम एलिमेंट 1 होती है ना. अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ लूडो में तो उसमें जो सबसे कम आने वाला जो नंबर है वो क्या है, 1 है ना. और अगर वही नंबर दूसरे पे भी आ जाता है, दूसरे डाइस पे भी आता है, सो इट सम विल बी मिनिमम. सो इसकी जो मिनिमम सम आएगी इट विल बी 2. एंड द मैक्स पॉसिबल इज कि जब दोनों पे छक्का आ जाए तो मैक्स पॉसिबल 6 आ जाए. तो मैक्स पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट इज 12. बाकी इसके बीच में रहेगा. और कैसे कैसे रेंज रहेगा ये टेबल से मैंने आपको दिखा के बना दिया कि सम ऑफ 2 वाली जो है वो एक पॉसिबिलिटीज है. जस्ट काउंट दी बॉक्सेस. एंड सम ऑफ 3 विल बी 2 केस ऐसे, मतलब 2 ऐसी केसेस पॉसिबल है जहाँ पे तीन की सम आ सकती है, विच इज 2, 1 एंड दी 1, 2. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइक टेबल मेथड. सो या क्योंकि यहाँ पे आपको लाइक क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी जो मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया था.
यहाँ पे लाइक चीजें समझने में दिक्कत हो रही होंगी क्योंकि डायगोनल सीधी नहीं बन रही थी. सो या सो दिस इज एक्चुअली द टेबल मेथड. आप इससे गो थ्रू हो सकते हो एंड कैसे कैसे करनी है नहीं करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर क्वेश्चन. So our question is something. Sum of digit is 9, right? And the number of sample is 36. वो हमने पहले ही define कर रखा है. So our probability of A event will be NE by NS. So क्या आनी चाहिए? हमारे पास क्या आनी चाहिए? हमारे पास आनी चाहिए sum of element will be 9, right? कहाँ पे? Sum of digit is 9. Okay. So it will be 36 obviously. So now let's go to the table here and try to zoom in and look at here. We need the sum of 9. Okay, so there is the sum of 9, right? There is the sum of 9. Follow this diagonal. One element, two element, three element, four element. And वो element क्या है? 6, 3, 5, 4, 4, 5 and 3, 6. Just write it here. So what we'll get? 6, 3, 4, 5, 5, 4 and 3, 6. So the total number is actually 4. 1, 2, 3, 4. 4 by 36. So its probability is nothing but 1 by 9. Okay, so this is actually the table method of solving this thing. Now the second event is actually sum of digit is prime number. Okay, so the probability of finding B is like same NE by NS, but this time we have to look at the sum will be prime number, right? The sum will be prime number. So let me define the prime number first. So the least prime number is, we all know that 2, then 3, but we have to see the prime number between किसी किसके बीच होने चाहिए 2 से लेके 12 के बीच में. बिकॉज सम की जो वैल्यू है ना वो 2 से लेके 12 के बीच में ही हो सकती है. मैंने यहाँ पे कहा था मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द डिजिट इज 2 and the maximum possible is 12 when two dice are thrown simultaneously. So 2, 3. Now let me find out the prime number between 2 and 12. So 2, 3, 5, 7, 11, right? And now we अब हमें क्या पता करनी है कि कितने सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिनको सम करे, जिनकी डिजिट्स का सम करे तो 2 आ जाए, जिनके डिजिट्स का सम करे तो 3 आ जाए, जिनके डिजिट्स का सम करे तो 5 आ जाए, 7 आ जाए और 11 आ जाए. So let's go through the table and remember that we have to find the 2, 3, 5, 7, 11. So just count it. Go to the table and try to zoom in. Now let's move to the 2. So for sum of 2, we have actually one possibility, which is actually 1, 1. अब हमें क्या चाहिए? Sum for 3. So for sum for 3, we have actually two possibility, which is 1, 2, and next one is 2, 1. Now for the next part, we need sum of 5 because next prime number is not 4, 5. So for 5, there is how many possibilities? 4, 1, 3, 2, 2, 3, and 1, 4. 4 possibilities. 2, 3, 1, 4, 4, 1, and 3, 2. So there will be 1, there will be 2, and there will be 4. Now what's the next prime is? Next prime is sum of 7. Sum of digit is actually 7. So 7 पे जाते हैं, there will be how many possibilities? 1, 6, 2, 5, 3, 4. Just count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilities. Now the next is sum of 11. So there is one possibility. Sorry, two possibilities. 6, 5, and 5, 6. So add the whole these number of possible outcomes. So what you will get? The number of possible event will be 2 plus 1 plus 4 plus 6 plus 2. 2 plus 1 plus 4 plus 6 plus 2. So what is the number it will be? It will be like 15. Okay. So the number will be 15. So now what you have to do here, you have to just write here 15 by 36 is equal to 5 by 12. So this is the possibilities for the, probability for the B part. I hope this thing will be clear to all of you. What I am trying to say is, you know, so it's an easy problem. Hopefully it is, है ना? कुछ भी करना नहीं था.
एंड इट विल बी इजी सॉल्वेबल. अब देखो, मैंने कहा था कि ये सारे प्रोसेस टेबल वेबल जो है ना बोर्ड वगैरह में फॉलो करना, क्योंकि वहां पे मार्क्स वार्क्स भी होते हैं शायद टेबल वेबल बनाने के. बट जेई जैसे एग्जाम में उन्हें बस फाइनल आंसर से मतलब होती है. ठीक है, सो वी विल गो थ्रू दिस शॉर्ट ट्रिक. देखो, प्रोबेबिलिटी के मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें एक बेसिक मेथड बताया है और दूसरा शॉर्ट ट्रिक बताया है. ठीक है, तो बेसिक मेथड जो है ना आप क्लास से सीख लो, बट जो भी असाइनमेंट वगैरह दूंगा ना उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक ही लगानी है. ठीक है, बिकॉज नो वन केयर अबाउट दी प्रॉपर स्टेप. अगर आपको बोर्ड्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, सो यू विल गो थ्रू दीज, फॉलो, आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे. ये जैसे मैंने जितना भी लिखा है टेबल बनाया, आपको टेबल बनाना होगा, डायगोनल रिप्रेजेंट करनी होगी, एंड देन यू हैव टू राइट दी ऑल पॉसिबल आउटकम जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है. बट असाइनमेंट में मेनली जेई और एनसीईआरटी की चीजें दी होती हैं, सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द trick. So let's find out the special trick to solve this kind of problem. So let me write it here and then I will define. Okay, shortcut. So I'm not talking about like any digit. I'm just talking about a general case. Probability of sum is x. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर सम इज x. मैं डायरेक्टली देखो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू x माइनस 1/36, जहाँ पे x बिलोंग्स करता है 2, 3 से लेके 7 तक. एंड द नेक्स्ट थिंग इज 13 - x/36, जहाँ पे x बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेके 12 तक, क्योंकि 12 तक ही पॉसिबल है ना. तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक. देखो एक लाइन में बस क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर लिखो, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है. कैसे आ रहा है वो एक मैं बता देता हूँ. देखो, जो मैंने इस फॉर्मूले को निकालने के लिए क्या यूज करा वो चीज को समझो. जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैक्स सम पॉसिबल इज 12 एंड मिनिमम सम पॉसिबल इज 2, एंड 2 पे प्रोबेबिलिटी एक ही केस पॉसिबल है, तो 1/36. यहाँ पे भी 1/36. सो आई जस्ट मैनेज द केस लाइक 2 - 1 1/36, 13 - 12 इज इक्वल टू 1/36. समझ में आ रही है. अब यहाँ पे देखते हैं एक बारी मैच करके कि इज इट वर्केबल और नॉट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ डिजिट इज 9 एंड 9 इज लाइंग बिटवीन आवर बिलोथ रेंज, राइट, इस रेंज में आ रही है ना. सो आवर प्रोबेबिलिटी इज, वी कैन डायरेक्टली राइट इट हियर, आवर प्रोबेबिलिटी इज 13 - x/36, and here the value of x is 9. So 13 - 9/36, 4/36, it will be 1/9. Oh, look at and match the answer by the, oh, it's a one liner proof, right? with actually हमें ये सारे टेबल वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. we just find the probability की जनरल केस पे हमने डिराइव करा, which is actually 13 - x/36 for the x belongs to 8 to 12, and for like x minus 1/36 for x belonging to 2 to 7. So this thing you have to remember and it will be solvable easily. Now let's try to find out the sum of the digit is prime number. Okay, so the prime possible is 2, 3, 5, 7, 11. I know. So the sum of two region will be like actually lying in this region. So it will be 1/36. For 3, it's also lies in this region. So it will be 2/36. For 5, 4/36. For 7 also there will be 6/36. But for 11, we have to move to there. So there will be 13 - 11. That will be 2/36. Just add the all of them. So what we will get? 4 to 6, 1, 7, 7 to 9, 6, 15. And here we will get the answer will be like 5/12. This is actually equal to our final answer. ठीक है. सो ये सारी एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक्स के इस्तेमाल करके डायरेक्टली वी कैन राइट इट द आंसर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द बाय होल प्रोसेस. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे. सो एक्चुअली यू हैव टू गो थ्रू दैट एज वेल. ओके, सो ओके नाउ एक्चुअली ठीक है.
एंड आई होप अपने लिमिट थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी. सो लेट मी इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हियर. देखो, अब ये प्रोबेबिलिटी में क्योंकि केसेस लिमिटेड है, तो मैंने आपको पहले ही प्रॉब्लम दिखाया था. ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आज मैंने डिस्कस करी थी, उसमें मैंने क्या करा था, एक्चुअली केसेस लिमिटेड है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था कि किस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मर्ज करा था, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम के सम ऑफ ऑड एंड इवन वाली कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम को थोड़ी सी टफ बनाने की कोशिश करी थी. क्योंकि प्रोबेबिलिटी में केसेस अभी तक के जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें लिमिटेड है. सो हाउ कैन बी make the different variety of questions. So the only way is to involve some other chapter in it. Okay, so let me involve the concept of limit here, and let's see how can you approach. So my suggestion is to pause the video and try to solve the question, then we and then look at the solutions. So the next problem is something like two dice are thrown. Two dice are thrown. If digit occur on them is A and B, okay, respectively. Find the probability, then find the probability of limit x tending to 0, a to the power x plus b to the power x divided by 2, 1 by x is equal to 6. Okay. सो यू हैव टू, देखो क्वेश्चन क्या क्या रही है पहले मैं बताता हूँ. मैंने दो डाइस को थ्रो किया. एक डाइस पे नंबर आया कुछ ए, मुझे वो ए नहीं पता है क्या आया, 1 से 6 के बीच में ही होगा ऑब्वियसली. दूसरे डाइस को भी थ्रो करा, उस पर भी कुछ नंबर आया बी, ऑब्वियसली वो भी कुछ 1 से लेके 6 के बीच में ही होगा. अब आपने सॉल्व करनी है एंड बतानी है कि जब इस क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स बाई 2 1/6 की वैल्यू क्या हो जाए, 6 हो जाए. तो आपको बेसिकली ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, सो वी कैन फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी. So my suggestion is to, again I'm saying, कि pause the video and try to solve it by own. Then I'm gonna solve it. So let's try to solve. Now look at here. This limit is of form. If we insert 0 here, so it will be like a to the power 0 plus b to the power 0 by 2, 1 by 0. So actually this will count as 1 to the power infinity type. So what I'm trying to do here is, let limit will be L. So it will be like ln of 6, which is actually limit value is given here. So I'm just taking log both sides. Take, because इसके solve करने का यही मिलेगा ना, power into base -1. So take log both side. Log both side. आपने ये लिमिट में पढ़ रखा होगा. So it will be ln of 6 is equal to limit x tending to 0, and what I'm trying to do here is power into base -1. So the power is 1/6 into base -1, a to the power x plus b to the power x by 2 minus 1, right? And now what you have to do here is just you have to apply the limits property. So let me write it here. A to the power x minus 1 plus b to the power x minus 1, right? And by x into 1/2, right? And this value will be counted as 1. We all know that by the limit property. So it will be like ln of 6 is equal to ln of ab to the power half. है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है ln of a आता है. Let me write it here. Actually a to the power limit x tending to 0, a to the power x minus 1 by x will be like ln of a. है ना. So here will be counted as ln a and then ln b, then it will be counted as ln ab, because basic property आपने पढ़ रखी होगी. So now here we will get ab is equal to 36. Okay, that means कि जब हमने डाइस को थ्रो किया ना, जब हमने डाइस को थ्रो किया तो ए आया एंड बी आया, है ना.
हमने अभी तक सम देख रहे थे ना, वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू द सम। जो टेबल्स हमने देखा था, सम देख रखे थे। तो सम कहाँ से कहाँ वैरीज कर रहा था, मिनिमम सम आ रहा था 2, मैक्सिमम सम आ रहा था 12। नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों की प्रोडक्ट मेरे पास 36 आ रही है। तो लेट्स गो टू द टेबल अगेन एंड ट्राई टू फाइंड की मिनिमम प्रोडक्ट कितनी आ सकती है एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ सकता है। तो लेट्स गो टू द टेबल जहाँ पे हमने बना रखा है and try to find it out the minimum and maximum uh, product possible when we throw the two dice. So देखो मिनिमम पॉसिबल जो प्रोडक्ट है वो तो 1 है, जो कि 1 और 1 के प्रोडक्ट से आ रही है। उसके बाद देखते हैं 2 प्रोडक्ट है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, बट 3 4 3 4 6 द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 6 और 6 की 36 ही आ रही है। और वो की एक ही केस है क्योंकि उसके बाद वाला तो 30 है, फिर 24 है, 20 है, वो तो बेसिकली बाइनोमियल वाली जा रहा। तो इट विल बी सिंपली लुकिंग की जो मैक्स पॉसिबल प्रोडक्ट जो है ना वो 36 है, एंड जो मीन पॉसिबल प्रोडक्ट है वो है 1, एंड मैक्स पॉसिबल प्रोडक्ट जो है ना वो बस एक ही केस में आ रहा है, वो है 6 6। सो वी एक्चुअली फाइंड इट आउट हियर कि व्हाट इज आवर, लुक एट हियर, कहाँ गया। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि अपनी जो A and B है वो एक्चुअली 6 and 6 है। Now we have to find the probability. So the probability will be, required probability is nothing but NE by NS. So our NE by NS will be, we all know that it will be 13 minus X by 36. And we all know that here the A plus B value is 12, which is X value is 12. So 1 by 36. So this is the thing that we have to find it out. Okay, so this is the actual problem that we are using the concept of the multiple chapter जो हमने पहले cover कर रखी है. Okay, so yeah, this is the thing that you have to uh, keep in mind. Now let's take an something strange example. Try to merge. Now the next problem is based on merging the quadratic equation to the probability. Let's see. Merging quadratic to merging quadratic to probability. Okay, let you actually we have to solve the cards problem as well. अच्छा पूरी डाइस पे ही निकल गई ना. Okay, डाइस problem is really like वो है. Okay, no worry, we will deal tomorrow. And okay, so merging quadratic to the probability. So what the question is, first P Q are selected randomly from 1 to 10. मतलब P and Q दो नंबर है जिसको 1 से लेके 10 के बीच में अपन सेलेक्ट कर रहे हैं. Then what is the probability? Then what's the probability? Then what's the probability? पहला जो है वो ये है कि x square plus pxo is equal to has a real root. And the second problem is a real and distinct root. Okay. So this is the actually question that we have to find out. Where हमने क्या करा, देखो 1 से लेके 10 के बीच में ना दो नंबर हमने सेलेक्ट करनी है. एक P होगा, एक Q होगा. रैंडमली मे भी दोनों नंबर सेम आ जाए, वो फर्क नहीं पड़ता है ना. बस हमें रैंडमली P एंड Q सेलेक्ट करना है. मान लो मैंने बोल दूंगा 5 5, बिल्कुल है ना. तो वो पॉसिबिलिटीज है. सो देन हमें फाइंड करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रियल रूट. तो देखते हैं रियल रूट की क्या कंडीशंस होती हैं. सो अगर आपने 11th में डिटरमिनेंट वाली, वो जो डिटरमिनेंट बोल रहा हो, क्वाड्रेटिक पढ़ रखे होगे, तो उसमें इट विल बी लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac
if this is positive, that means b square minus 4ac is positive, so there will be real root greater than equal to 0. There will be real root, and b square minus 4ac is greater than 0, so it will be real and distinct root. Okay, so and here the quadratic equation will be ax square plus bx plus c, for which I am talking to. ठीक है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे अपन बात कर रहे थे कि जो डी था विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, सो इट विल बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मींस रियल रूट है, एंड अगर ग्रेटर देन बस ग्रेटर देन 0 है, सो इट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ रखी होगी, इट विल बी इजी, राइट? सो इन दिस केस, इन आवर प्रॉब्लम actually a is equal to 1 है, b is equal to p है, एंड c is equal to q है नहीं है? देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 है. कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? यहाँ पे b है, यहाँ पे p है, तो b की वैल्यू p के इक्वल है, इट विल बी इक्वल. ओके, नाउ फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सैंपल. तो देखो सैंपल कितना है? 100 है. कैसे 100 है? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब देखो p है ना, इन 10 नंबर में से मैं कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ. तो कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं 10c1, एंड q भी कुछ वैसा ही हो रहा है, तो 10c1. तो 10c1 की वैल्यू कितनी होती है? 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100. तो ये तो क्लियर है. मैं मतलब थोड़ी सी परमुटेशन की यूज कर रहा हूँ. देखो मेरे को इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो वी आर गोइंग थ्रू द सिलेक्शन रूल. एंड सिलेक्शन किसकी यूज करके करते हैं? कॉम्बिनेशंस का. एनसीआर, राइट? सो वी आर जस्ट डूइंग एनसीआर. वी हैव टू सेलेक्ट वन थिंग फ्रॉम 10 ऑब्जेक्ट. लाइक लुक एट, ऐसा समझो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट को चुनना है, 10 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? 10 में से किसी एक को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ना. तो 10 तरीके हैं ना चुनने के, 10 तरीके. या तो मैं या तो मैं पहली बारी फर्स्ट को चुनूं, दूसरी बारी सेकंड को चुनूं, थर्ड बारी फिफ्थ को चुन लूं, है ना? तो वैसे वैसे करके टोटल 10 वे हैं, तो दोनों के 10-10 तरीके हैं, टोटल 100. नाउ लेट्स talk about the number of event. So for the first case अपना क्या है? फर्स्ट केस इज फॉर रियल. तो रियल के लिए क्या होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए ना, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो दैट मीन्स कि p स्क्वायर माइनस 4q विल बी ग्रेटर देन 0. तो दैट मीन्स कि p स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए ना 4q से बड़ी होनी चाहिए. अब यहाँ पे देखो कोई अदर वे नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको एक टेबल बनाना पड़े और ये वेरीफाई करना है कि p की वैल्यू क्या लें और q की वैल्यू क्या लें, कि सच दैट ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा हो. ठीक है, और कोई दूसरी वे है ही नहीं आपके पास. ठीक है, और कोई दूसरा वे नहीं है आपके पास. ठीक है, the only way is to solve this kind of problem is to make tables. ठीक है, so now let's try to solve it out, and then we will look it here. So for let me try to make the we are taking the value of q here. Okay, क्योंकि q पे डिपेंड है ना. यहाँ पे देखो q is independent and p is dependent variable. So first take the q and then take the p. Okay, because look at here q is independent and p is dependent. So ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ऐसा हमने ले लिया. अब जब मैं q की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे p के कितने पॉसिबिलिटीज है? तो p स्क्वायर ग्रेटर देन 4. मैंने q की वैल्यू 1 ले रखी है भाई, ऐसा ध्यान रखो. मैंने q की वैल्यू कितनी ले रखी है? 1. तो एक्चुअली मेरी p के पॉसिबल वैल्यू कितने हैं? 1 है, 2 है ना? इक्वल होने के लिए, राइट और नॉट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1 2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 अगर लेता हूं तो एक ग्रेटर देन 4, ये गलत हो गया ना. बट 2 लेते हैं तो इट विल बी राइट. सो इट विल बी लाइक 2 3 4, ऐसा सा कहां तक जाएगा? 10 तक. जब मैं q की वैल्यू 2 लेता हूं, दैट मीन्स p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8. 4 2 8. अब यहाँ पे देखो
तो अगर मैं यहाँ पे अगर p की वैल्यू 3 से लेना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 2 लेंगे ना तो 4 आ जाएगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, सो 3 से लेके 10 तक। अब बात करते हैं q की वैल्यू 3 ले लिया जाए, तो p स्क्वायर इज ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब देखो, अगर 3 लोगे तो फिर 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 गलत हो जाएगा। 4 लेके देखते हैं, 16 ग्रेटर देन 12, एग्जैक्टली राइट है। तो 4 से लेके 10 तक। सिमिलर वाइज 5 है तो 5 लेके देखते हैं, तो 5 4 जा 20। ऑब्वियसली इस बार कहां से लेना पड़ेगा, 5 से ही लेना पड़ेगा, तो 5 से लेके 10 तक। नेक्स्ट इज 5 से लेके अब क्या लेते हैं ना, 6 लेते हैं। क्यू की वैल्यू क्या लेते हैं, 6, so इट इट ऑल्सो भी इक्वल टू 24। तो पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24, सो अगर पी की वैल्यू 5 ले लेते हैं तब भी चल जाएगा, क्योंकि 25 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 24। सो 5 to 10। The next is 6. I think here is some mistake I done. लिखा सही है, बस उल्टे यहाँ पे कर दिया मैंने। There is actually 4, लिखना था 4, लिख गया 5। Okay, so here is actually वो 4 ही है। Here is 5 and 5, क्योंकि 6 की हमने डील करी ना, 6 को 24 करा था। 6 4 जा 24, तो that's it. And then we will deal with the 7, then we will deal with the 8, and then we will deal with the 9 and 10. So for the 7, it will 7 4 are 28, so it's also be equal to the 6. So 6 to 10, another will be 6 to 10 because कोई बीच में है ही नहीं, and another will be 6 to 10. For 9 will be also, and then 10 will be 7 to 10. Now just count it out. So 2 to 10 will be b minus a plus 1. So it will be like 10 minus 2 plus 1. So it will be 9 element, right? So 9, b minus a plus 1, it will be 8, it will be 7, it will be 7, it will be 6, it will be 6, and it will be 5, it will be 5, it will be 5, it will be 4. And just add this whole term. So what we will get? 9 plus 8 plus 7 plus 7 plus 6, 6 and triple 5, 6, 6, triple 5, and then 4 by 100. So when we add this, we will get 62, I think. 62 by 100. So the probability is 0.62. So this is the thing that कि अगर आपको कोई कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना हो ना, तो the only way is to make a table. यहाँ पे देखना है कि मैं किसकी वैल्यू लूं, तो ऑब्वियसली पता होगा, आपने फंक्शन पढ़ रखी होगी। So q is independent variable and p is depending on q. So we will actually taking the value of q. Okay. So this is the actual way to solve this kind of problem. And actually थोड़ी सी पीछे हो गए, क्योंकि आज हमें प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन भी करने थे। ओके, बट नो वरी, कल की लेक्चर में हो जाएगी। So that's all for today. Tomorrow we will discuss some more problem and new concept as well. So that's all for today. Thank you.